हमारी कहानी शुरू होती है शर्मा परिवार के हलचल भरे, प्यार से भरे और थोड़े बहुत गड़बड़ वाले घर में। इस परिवार के मुखिया हैं पंडित प्रेमचंद शर्मा, यानी मैं, परंपरागत सोच और सोने जैसे दिल वाला आदमी। लेकिन हाँ, मुझे पंडित प्रेमचंद मत कहिए। दूध वाले से लेकर मेरे अपने पोते पोतियों तक सब मुझे P.C. साहब ही बुलाते हैं। अब देखिए, मैं रिटायर्ड हिस्ट्री टीचर हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि पुराने तरीके ही सबसे अच्छे होते हैं। किताबें टैबलेट से बेहतर हैं और हाथ से लिखे खत ईमेल से ज्यादा दिल से निकलते हैं। लेकिन हाल ही में मुझे थोड़ा सा अकेलापन महसूस होने लगा था। मेरे पोते पोती रोहन और रिया हमेशा अपनी स्क्रीन में घुसे रहते, जूम और गूगल मीट जैसी अजीब बातें करते रहते। एक शाम जब मैं अपनी अदरक वाली चाय पी रहा था, मैंने एक बड़ा ऐलान कर दिया जिससे पूरे परिवार की नींद उड़ गई। सुनो सब लोग, मैंने पूरे जोश में कहा, ये बच्चे अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। ये सारा दिन इन चमकते डिब्बों में घुसे रहते हैं। मैंने तय किया है कि मैं खुद इन्हें पढ़ाऊंगा, और वो भी इनके ही तरीके से। मैंने अपने बेटे के लैपटॉप की तरफ नाटकीय अंदाज में उंगली उठाई। मैं बिजी साहब, अब ऑनलाइन क्लास लूंगा। मैं इस नई पीढ़ी को असली पढ़ाई का मतलब दिखाऊंगा। पूरा परिवार मुझे हैरानी से देख रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या फिर किसी तकनीकी संकट के लिए तैयार हो जाए। मेरी पत्नी शांति देवी, जिन्हें सब प्यार से दादी जी कहते हैं, तो अपने बुनाई के सुई तक गिरा बैठी। सच में? उन्होंने हैरानी से पूछा, आप जो आज तक माउस को सिर्फ अनाज खाने वाला चूहा समझते थे, आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे? मेरे बेटे रमेश ने धीरे से समझाने की कोशिश की। पापा, बहुत बढ़िया सोच है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आपको अच्छा इंटरनेट चाहिए, वेबकैम, माइक्रोफोन। लेकिन मैं कहां मानने वाला था। बिल्कुल बकवास। अगर मैं सिर्फ एक चौक और ब्लैक बोर्ड से 60 शरारती बच्चों की क्लास संभाल सकता हूं, तो स्क्रीन पर कुछ बच्चों को भी संभाल सकता हूं। अब P.C. करेगा पीसी पर कमाल। पोते पोती रोहन और रिया मन ही मन बहुत खुश थे। उनके दादू, जिन्हें एक साधारण मैसेज भेजने में भी मदद चाहिए होती थी, अब ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं। ये उनके लिए हफ्ते की सबसे रोमांचक खबर थी। दोनों ने शरारती नजरों से एक दूसरे को देखा, जैसे आने वाली मस्ती की झलक देख ली हो। मैं P.C. साहब तो बस गर्व से खड़ा था, जैसे कोई राजा अपने नए डिजिटल साम्राज्य को जीतने की ठान चुका हो। मिशन तय हो गया था, तारीख पक्की हो गई थी। P.C. साहब की पहली ऑनलाइन क्लास होने जा रही थी और पूरा शर्मा परिवार तैयार था सबसे मजेदार शो को सामने से देखने के लिए। क्लास से एक दिन पहले तो घर में जैसे तूफान आ गया। मैंने उस लैपटॉप को दुश्मन के सिपाही की तरह देखा, जिसे जंग से पहले समझना जरूरी था। मैं उसके सामने बैठा स्क्रीन को उंगली से दबा रहा था। रोहन, इधर आओ, ये टेलीविजन चैनल क्यों नहीं बदल रहा जब मैं इसे छूता हूं? रोहन हंसी रोकते हुए समझाने लगा, दादू, ये लैपटॉप है, टीवी नहीं, और ये टच स्क्रीन भी नहीं है। आपको ये छोटा सा चौकोर पैड इस्तेमाल करना है, ट्रैक पैड। मैंने ट्रैक पैड को ऐसे देखा जैसे वो किसी और ग्रह की पहेली हो। जैसे ही उंगली घुमाई, स्क्रीन पर तीर इधर उधर भागने लगा और मैं कुर्सी से उछल पड़ा। अरे, ये तो जिंदा है। ये कर्सर तो अपनी मर्जी से घूम रहा है। फिर आया वेबकैम का नंबर। रमेश ने सॉफ्टवेयर सेट किया और वो छोटी सी विंडो दिखाई जिसमें मेरा चेहरा दिख रहा था। मैं इतना करीब झुक गया कि नाक स्क्रीन से टकरा गई। हेलो हेलो, सुन सकते हो मुझे अंदर? मैंने स्क्रीन पर चिल्ला दिया। रिया हंस पड़ी। दादू, ये सिर्फ कैमरा है। ये आपको देख सकता है लेकिन सुन नहीं सकता। उसके लिए माइक्रोफोन चाहिए। मैंने अगले 10 मिनट कैमरे में चेहरा देखकर बाल संवारे और बार बार पूछा, क्या मैं समझदार लग रहा हूँ? मुझे असली गुरु जैसा दिखना चाहिए, कोई नौसिखिया नहीं। अब बारी थी ऑडियो चेक की। रमेश ने बोला, पापा, माइक्रोफोन में बोलिए। मैंने गलत समझकर पूरा लैपटॉप उठाया और चार्जिंग पोर्ट में बोलने लगा। हेलो, टेस्टिंग, 1 2 3। P.C. साहब ड्यूटी पर। बच्चे पेट पकड़कर हंसने लगे। नहीं दादू, माइक्रोफोन वो छोटा सा छेद है, कैमरे के बगल में, रमेश ने बताया। मैंने आंखें मिचमिचाई। ये छोटा सा बिंदु, आप चाहते हो मेरी दमदार आवाज इसमें समा जाए? हमारे जमाने में बड़े बड़े माइक्रोफोन होते थे जिन्हें पकड़कर गर्व महसूस होता था। ये तो मेरे गले का अपमान है। सच में मुझे नए माइक्रोफोन का साइज देखकर बुरा लग गया था।
आखिरकार घंटों की कोशिश के बाद रमेश की सहनशीलता की परीक्षा हो गई और बच्चों के पेट में हंसी के मारे दर्द होने लगा। लेकिन सेटअप किसी तरह तैयार हो गया। मैंने एक बड़ा सा कागज लिया जिस पर तीरों के साथ म्यूट, स्टार्ट वीडियो और एंड कॉल बटन के नाम लिखे थे। मैंने माउस का बटन कम से कम 50 बार दबाकर प्रैक्टिस कर ली थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी हवाई जहाज का पायलट हूँ। पहली उड़ान के लिए तैयार। ठीक है, लगता है अब मैं तैयार हूँ, मैंने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। कल दुनिया देखेगी एक नए युग की शुरुआत, P.C. साहब का ऑनलाइन शिक्षा युग। बस अब परिवार को इंटरनेट कनेक्शन की सलामती की दुआ करनी थी। आखिरकार बड़ा दिन आ ही गया। मैं P.C. साहब एकदम झकाझक कुर्ता पहनकर अपने स्टडी में शान से बैठा था। मेरे पोते पोती और उनके कुछ कजिन्स स्क्रीन पर छोटे छोटे चौकोर डिब्बों में नजर आ रहे थे। नमस्ते बच्चों, ज्ञान के मंदिर में आपका स्वागत है, मैंने शुरू किया, लेकिन मेरी आवाज थोड़ी गूंज रही थी क्योंकि मैं माइक के बहुत पास बैठा था। पहली दिक्कत तुरंत आ गई, मुझे सारे बच्चे दिख ही नहीं रहे थे। रमेश, रमेश जल्दी आओ, कुछ बच्चे गायब हैं, मुझे सिर्फ 4 डिब्बे दिख रहे हैं जबकि 7 बच्चे हैं। रमेश भाग कर आया और बोला, पापा बाकी बच्चों को देखने के लिए स्क्रॉल करना पड़ता है। मैंने हैरान होकर पूछा, स्क्रॉल? ये स्क्रॉल क्या होता है? कोई जादू मंत्र है क्या? 5 मिनट की जद्दोजहद के बाद जिसमें मुझे माउस के स्क्रॉल व्हील का ज्ञान मिला, आखिरकार मैं सभी बच्चों को देख सका। मैंने गला साफ किया और मुगल साम्राज्य का पाठ शुरू किया। तो बच्चों, महान सम्राट अकबर। तभी एक डिब्बा अचानक बिल्ली की फोटो में बदल गया। चश्मा पहने बिल्ली, ये छोटी तिया थी जिसने वर्चुअल बैकग्राउंड का जादू खोज लिया था। तिया, ये क्या मजाक है? मेरी क्लास में बिल्ली क्यों है? इसे तुरंत हटाओ, मैंने डांटते हुए कहा। तिया हंस रही थी और बाकी बच्चों ने भी बैकग्राउंड बदलना शुरू कर दिया। अब स्क्रीन पर डायनासोर, समुंदर और अंतरिक्ष की तस्वीरें तैर रही थी। मेरा पारा चढ़ गया। ये इतिहास की क्लास है, कोई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता नहीं। सब लोग अपने असली चेहरे पर वापस आओ। इसी बीच मैंने गलती से एक बटन दबा दिया। अचानक मेरे सिर पर वर्चुअल खरगोश के कान आ गए। बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए। तालियां, उंगलियां, पेट पकड़कर हंसी, सब चालू हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तुम सब ऐसे हंस क्यों रहे हो? मुगल साम्राज्य में कुछ मजाक है क्या? मैंने गंभीरता से पूछा, लेकिन मेरे सिर पर खरगोश के कान देखकर बच्चों की हंसी और तेज हो गई। ये तो एकदम असली कॉमेडी शो बन गया। रोहन ने हंसी रोकते हुए चैट बॉक्स में टाइप किया, दादू आपके सिर पर बनी ईयर्स हैं। मैंने छोटा सा टेक्स्ट पढ़ा, बनी ईयर्स? मेरे सिर पर? ये क्या बेवकूफी है? मैंने स्क्रीन के काले हिस्से में अपनी परछाई देखी तो खुद ही डर गया। मैंने बेतहाशा बटन दबाने शुरू कर दिए, पर खरगोश के कान हटने की बजाय अब मेरी आंख पर समुद्री लुटेरे की पट्टी और एक मजेदार मूंछ भी आ गई। अब तो क्लास पूरी तरह गड़बड़ हो गई थी। अकबर का पाठ कब का भूल चुके थे। अब नया टॉपिक था, दादू की डिजिटल ड्रेस पार्टी। Just when I thought things really couldn't get any worse, my audio decided to start acting up. My voice began to sound like, well, one of those robots from a science fiction movie. Children, the importance of discipline is paramount, I said, my words glitching and breaking apart. The kids, of course, found this absolutely hilarious. Little Arav, that cheeky fellow, started imitating me. Yes, Dadu. We are listening very carefully. And that just set off another round of giggles echoing through the virtual classroom. Now completely unaware of my robotic voice, I thought the children were just making fun of me. Stop making those strange noises. Is this how you respect your elders? I grumbled, feeling my frustration rise with every passing second. And then, oh, the classic mistake. While trying to fix my audio, I accidentally muted myself. I kept speaking, waving my hands around, explaining the finer points of Akbar's administrative policies, but not a single sound was coming out. I must have looked like some character from a silent movie. The children started waving their hands and pointing at their ears, trying to show me something was wrong. Ria even typed in the chat,
Dadu, we can't hear you. You are on mute. But I was so engrossed in my lecture, I didn't notice the chat or their frantic signals. I just assumed the children were being unusually well-behaved and quiet for once. Rohan, clearly frustrated that I wasn't getting the message about the bunny ears, decided to use the annotate feature. He drew a huge red circle around my head on the shared screen and wrote, "Bunny Dadu" in big letters. That was it. The other kids were now laughing so hard, some of them nearly fell off their chairs. When I saw that red drawing suddenly appear on my screen, I was utterly baffled. Who is drawing on my blackboard? Stop this vandalism at once. In my day, we used chalk, not this red electronic paint. This is disrespect of the highest order. I had no idea, of course, that the so-called blackboard was actually my own face. Finally, after what felt like 10 minutes of silent lecturing and digital graffiti, Ramesh came to the rescue again. He calmly walked in, unmuted my microphone, and turned off all the filters. My voice returned to normal, and the bunny ears disappeared. There! Now, what was I saying? I asked, completely clueless about the comedy show I had just unwittingly starred in. The children tried their best to compose themselves, wiping away tears of laughter. The history lesson might have been a total disaster, but the entertainment value, oh, it was off the charts. I had become, without even realizing it, the funniest online entertainer they had ever seen. Just as I was starting to regain a bit of control over my class, a new character made her grand entrance. Daddy G, holding a steel plate with a steaming hot paratha on it, walked right in. She had no idea that a live class was happening. She just walked in and stood behind me. "Are, listen, it's getting late. Will you eat this paratha now, or should I keep it in the hot case? It will get cold," she said, her voice as clear and loud as ever. All the kids on the screen sat up straight, their eyes wide with amusement. They could see Daddy G behind me, but of course I couldn't. Annoyed by the interruption, I waved my hand without turning around. "Shanti, can't you see I am in the middle of a very important lecture? I am shaping the minds of the future generation here," I whispered, not very quietly. Daddy G was not impressed. "Future generation can wait. This paratha with homemade butter cannot. You haven't eaten anything since morning. First, you eat, then you can do your tap-tap on this machine," she insisted, trying to put the plate on my desk. The kids were struggling not to burst out laughing, some hiding their faces behind their hands. The clash between my classroom and her kitchen was escalating. "Shanti, please! There are children watching! This is a professional environment!" I hissed, feeling my face get redder by the second. Then, Daddy G finally noticed the screen full of little faces staring back at her. She was surprised for a moment, but she recovered quickly. "Oh, hello children," she said, waving at the camera with a warm smile. "Is your Dadu teaching you well, or is he just boasting, as usual? Tell him to eat his paratha, otherwise, he gets very grumpy." This direct chat with Daddy G was honestly the highlight of the day for the kids. I was mortified. My scholarly image was being shattered by a paratha. Finally, I gave in. Okay, give it to me. But be quick," I grumbled. Daddy G placed the plate on my desk and patted my head, victorious. "Good boy, now eat up." Before leaving, she turned to the camera again. "Children, make sure you all eat properly, okay? A healthy stomach leads to a healthy mind." And with that, she walked out, leaving me sitting there, paratha in hand, my dignity in tatters. The so-called professional environment now smelled faintly of ghee and pickles. After the paratha incident and all those technical disasters, I have to admit, I felt pretty defeated. I took a bite of the paratha and, a strange sense of calm just washed over me. I looked at the screen, at all those smiling, giggling faces, my grandchildren and their cousins. They hadn't learned a single thing about the Mughal Empire, but we had all shared a moment of pure, genuine joy. It hit me then. My mission wasn't just about teaching history. It was about connecting with them. And in the most chaotic way possible, I had actually succeeded. So I decided to just let go of the lesson plan for the day and talk to them.
All right, settle down, I said, my voice much softer now. So you all think this technology is very smart, don't you? This computer, this internet, these bunny ears. The children nodded, eager as ever. You think it knows everything. I took another thoughtful bite of my paratha. But let me ask you a question. Can this super smart laptop make a paratha like your daddy's? Can it add that special ingredient of love that she puts in every meal she cooks for us? The children went quiet, really thinking about it. I continued, pointing my half-eaten paratha towards the camera like it was a scepter of wisdom. You see, this technology is a good servant, but it is a terrible master. It can connect us across miles. It can show us funny cat pictures, and it can even put silly ears on an old man's head. But it cannot give you the warmth of your grandmother's hug. It cannot replicate the taste of a home-cooked meal. It cannot hold your hand when you are scared. These are the things that truly matter in life, the things that you cannot download or unmute. I could see the children were really listening now. No more giggles, no more distractions, just quiet, thoughtful faces. So, enjoy your technology, I said, smiling gently. Learn from it, play with it, but never forget the real world. Never forget the people around you, the food on your plate, and the love in your family. Because no matter how fast your Wi-Fi is, it is the connection of hearts that is the strongest network of all. In that moment, I wasn't just a confused old man battling with technology. I was, for once, a real guru, giving the most important lesson of the day. As the class finally came to an end, I looked at the screen one last time. The children weren't laughing at me anymore. Instead, they were looking at me with a kind of respect and affection I hadn't seen before. I had started the class wanting to teach them about history, but, well, we all learned something much more valuable about life. I had set out to prove I could master technology, but in the end, I proved that some things are just beyond the reach of any gadget. I fumbled around for the end call button, the final boss in my technological adventure. Then Ria's voice chimed in, "Dadu, can we have another class tomorrow?" I was surprised. Another class? But I was terrible. I had bunny ears, I sounded like a robot, and your daddy interrupted with a paratha. Rohan laughed and said, "That was the best part, Dadu. It was the most fun class we have ever had. Please, can we do it again?" The other kids all joined in, a chorus of, "Yes, please," and more classes, Dadu. My heart just swelled with pride and happiness. I might have failed as a tech expert, but I had succeeded as a grandfather. I smiled and said, "Okay, we will have another class, but on one condition." The children leaned in, curious. "You all have to promise me that after the class, you will spend 1 hour away from any screen and talk to your parents or grandparents." The children agreed immediately. No hesitation. With Ramesh's help, I finally found the big red button and ended the call. The screen went blank. The house was quiet again, except for the faint clatter of dishes from the kitchen. I leaned back in my chair and finished the last piece of my now cold paratha. Still, it was the most delicious thing I had ever tasted. I had battled with a laptop, a webcam, and a microphone. And honestly, I had lost spectacularly. But in that defeat, I had won the hearts of my grandchildren. I realized it wasn't about being perfect or tech-savvy. It was about trying, about being present, and about sharing love and laughter. I chuckled to myself. The final lesson of the day was clear. In the grand scheme of life, a warm, delicious plate of dal chawal, or, well, a paratha, will always be more important than the most advanced technology in the world.